Okay, today we are going to discuss treatment strategies or the drugs used for the treatment of peptic ulcer, right? And first class, as we discussed in the previous lecture, was antacid. Okay, today I will discuss the pharmacology of antacids. Pharmacology of antacids. Okay, antacids. First, I will write the name of drugs again. Please. Name of drugs: sodium bicarbonate, sodium bicarbonate. The next drug is, or the next compound or the molecule is calcium carbonate. Calcium carbonate. Next is magnesium hydroxide. Hydroxide. The next molecule is aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide. Right? Okay. Now I will talk about the mechanism of action. Mechanism of action of these drugs. Mechanism of action of antacids. Antacids. Okay, as already you people know that sodium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium hydroxide, and aluminum hydroxides are basically a basis. Alkalis हैं ये क्या alkalis or bases. Okay, as we know that these antacids are weak bases. Antacids are weak bases and reacts with reacts with gastric HCl, gastric HCl, hydrochloric acid to form to form salt and water and water, which reduces the gastric acidity. Gastric acidity. Okay. So this is the mechanism of action of these antacids: sodium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide. Okay. Now I will write the clinical uses. Clinical uses. Right. The first use is peptic ulcer. Peptic ulcer disease. Right. Second is dyspepsia. Dyspepsia. What is dyspepsia? Dyspepsia is basically is abdominal abdominal discomfort and pain due to indigestion. Right. These are the two clinical uses of antacids. Now I will explain further one by one these compounds. First, I will talk about the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Okay, NaHCO3, right? Sodium bicarbonate. What basically happens in case of sodium bicarbonate? Definitely, it is a base. It is a base. Sodium bicarbonate. NaHCO3. Definitely, it is a base, and it will react with HCl, hydrochloric acid of stomach. Definitely. अब क्या होता है जब इन दोनों का रिएक्शन होता है आपस में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड they are going to form NaCl, as we have already talked about. When these antacids are going to react with the gastric HCl, they are going to form salt and water. Salt क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर बनेगा
H2O, और क्योंकि ये एक कार्बोनेटेड मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसमें ये होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक्ट्स एज बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ए बाई प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें क्या होता है, एज यू पीपल कैन सी हियर, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इस वजह से अब हमें कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे। क्या? पहला साइड इफेक्ट ये आएगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल, ये हम कैन से दैट साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स। ओके, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, राइट। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब कि आपका पेट जो है ना वो थोड़ा सा फूल जाएगा, बिकॉज देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड देयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वहाँ से बन रही है, तो इसलिए जिस तरह हम फील करते हैं ना कि हमारा पेट जो है ना वो भरा भरा लगेगा कि यार गैस बन रही है। ठीक है, बिकॉज CO2 इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। देन द सेकंड वन इज बेल्चिंग, बेल्चिंग। ठीक है, ये बेल्चिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम स्टमक, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम स्टमक ऑनवर्ड, राइट, टू नेक्स्ट एरिया, राइट। ओके, एक तो ये होगा। अब दूसरा ये हो सकता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो इसमें हमारे पास NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड, राइट। So this NaCl, as you people know that, will try to retain fluid. So we can say that fluid retention, because we know that sodium is osmotically active substance and it is excessively formed in the stomach. Definitely it will go into the blood and it will try to retain water. ठीक है, जब ये retain करेगा तो इससे क्या होगा? आपका blood pressure में increase blood pressure, increase blood pressure। ओके, उसके अलावा it can worse the symptoms of CHF। CHF का क्या मतलब है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF का क्या मतलब है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। So this is all about the sodium bicarbonate. Okay, on the next slide I will discuss rest of the uh, portion. Next is calcium carbonate. Next is calcium carbonate. Okay, in case of calcium carbonate, it अच्छा ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, ये वाला, इसमें जो है ना ये थोड़ा सा एग्रेसिव रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? दिस इज एन एग्रेसिव रिएक्शन, मतलब कि एसिड बेस का रिएक्शन जो है ना थोड़ा एग्रेसिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्लो रिएक्शन, रिएक्ट्स रिएक्ट्स स्लोली विद HCl। ठीक है, राइट। ओके, इसके अलावा इसमें इसके साइड इफेक्ट्स भी यही यही हो सकते हैं। क्या? क्योंकि ये भी कार्बोनेटेड है ना, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या हो जाएगा? आपकी बेल्चिंग। क्या हो जाएगी? बेल्चिंग, गैस बनेगी ना। ओके, ओके। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? एक बात गौर से सुनो, इसमें ये होगा कि ये क्या कर सकती है? मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। क्या कर सकती है? मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस, बिकॉज ये बेस है ना, क्या है? बेस है, तो ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होके तो वहाँ पे उसकी पीएच को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। एज यू पीपल नो दैट मेटाबॉलिक मींस रिलेटेड टू ब्लड, अल्कोलोसिस मींस इंक्रीज इन द पीएच। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगी पीएच? क्योंकि ये एक बेस है, ये स्टमक से रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टमक है ना, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपकी ड्रग आई, इधर ये ब्लड वेसल है या इधर ब्लड सप्लाई है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होकर किधर चली जाएगी? ब्लड में। तो ये ब्लड में पहुंचेगी तो यहाँ पे उसकी पीएच को क्या कर देगी? इंक्रीज, इंक्रीज पीएच। ठीक है, जब इसकी पीएच इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। एसिडोसिस होता है, एक अल्कलॉसिस होता है। तो अल्कलॉसिस होता है इंक्रीज इन द पीएच, एसिडोसिस क्या होता है? डिक्रीज इन द पीएच। ओके, और इसके अलावा ये और क्या काम कर सकती है? क्योंकि इसमें कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो दिस कैल्शियम कैन आल्सो कॉज हाइपर कैल्सीमिया।
can cause hypercalcemia. Okay, this is all about the calcium carbonate. Next is magnesium hydroxide, magnesium hydroxide and stomach. Oh, sorry, magnesium hydroxide and aluminium hydroxide, right? Listen, in case of magnesium hydroxide and aluminum oxide, they also react slowly, slow reaction. Okay. अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इस केस में क्या होता है, इस केस में चूंकि ये कार्बोनेटेड नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस नहीं, क्योंकि इनके अंदर कार्बोनेटेड, ये कार्बोनेटेड नहीं, जिस हमने पीछे पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें कार्बोनेट है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ अल्कली है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वहाँ सॉल्ट और वाटर बनता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, तो इसलिए यहाँ पे नो बैल्चिंग, नो बैल्चिंग, राइट। ओके। अच्छा, अभी इस ये जो है ना, दो दो आपके अभी हम वी हैव डिस्कस टू कंपाउंड, कौन कौन से, 1 मिनट, एक है हमारे पास मैग्नीशियम है और एक है एल्यूमिनियम, ये दो हमने पढ़े हैं, ठीक है। मैग्नीशियम वन एंड सेकंड वन इज एल्यूमिनियम, ये आपको पता +2 होता है और ये +3 होता है। ओके, ये मैंने वैसे लिखा है। अब जो मैग्नीशियम होता है ना, ये इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये डायरिया करवा सकता है, डायरिया, पेचिश, डायरिया, ठीक है। और एल्यूमिनियम का ये एक साइड इफेक्ट है, ये हमने क्या लिखना है यहाँ पे, साइड इफेक्ट, ठीक है। ओके, और ये क्या कर, ये कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर क्या करते हैं, फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी ना मिला के एक प्रिपरेशन बना दी, किसकी, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो जब उन्होंने इन दोनों की प्रिपरेशन को मिला के बनाया, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है डायरिया में क्या होता है, एक्सेसिव आपको अर्ज होती है फॉर द डेफिकेशन डायरिया में, और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, आपकी जो बाउल मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है, ठीक है। मतलब एक ये दोनों एक दूसरे के उलट है, तो एक डायरिया करवाता है, एक कॉन्स्टिपेशन करवाता है, तो जब इसकी प्रिपरेशन इकट्ठी होगी तो कुछ भी नहीं होगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ दीज एंटासिड्स। ओके, अभी जो है ना ये प्रिपरेशन आती है दो, एक आपने सुना होगा, इनो साशे आते हैं, इनो साशे, ठीक है। और एक टैबलेट आती है चूएबल, उसको कहते हैं ट्राइसिल, ट्राइसिल, ठीक है। जिस बंदे को हो रहा हो ना, मतलब वो कहे यार मेरे मेरे में एसिडिटी हो रही है, मुझे जो है ना हार्ट बर्न हो रहा है, या मुझे ढिकार आ रहे हैं, जो बंदा कहते हैं, उसको फिर अगर ये यूज़ करवाना है इनो, इसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं, कुछ लेमन ऑरेंज, लेमन ऑरेंज, राइट, इसके फ्लेवर होते हैं, किसके, इनो साशे के। और ये ट्राइसिल, ये टैबलेट है चूएबल, ठीक है। ये जो है ना, इनके अंदर ये वाली जो है ना वो हमारी ड्रग्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम, उसके अलावा साथ इनके टारटारिक एसिड भी कुछ के अंदर ऐड होता है, ठीक है। ये जो इनो है इसके अंदर तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, ठीक है, और ये आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट भी है, ठीक है। और इस तरह के और मिलते जुलते बेसिस हैं इसके अंदर। तो ये दो आप कह सकते हो कि मार्केट के अंदर दो फार्मूलेशंस हैं जिनके अंदर ये वाले ड्रग्स हैं, और इनको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड डिस्पेप्सिया।